Assalamu alaikum all. So this is our 27th session. We're closing. We close to finish the course. अच्छा, आज भी हम will continue our discussion which we were doing last time. Basically, we will extend our knowledge of transmission line to this wave phenomena. So a quick reminder for you people. आपको याद होगा when we discussed transmission line, uh, like this was a transmission line, and this was the load, and this was the characteristic impedance Z naught. And we basically said this Zn, we derived that was Z naught ZL cos beta L plus J Z naught sine beta L over Z naught cos beta L plus JZL sine beta L. So we looked over that impedance relationship the last time. So today we will look over the same relationship for the waves. अच्छा, अब उसको कैसे करेंगे? Let's set up the problem. So what we got here, let's say that we have let's say we have a material, you know, some material here which has an impedance of eta 3, and and you can think like this material as the load, right, as the ZL which was in that relationship. And this material is coated with some thickness, let's call that as Z is equal to 0, and let's call this as Z is equal to minus L with some thickness, L, and its intrinsic impedance is eta 2. And here there is an outside medium from the wave is coming. So what's going to happen, that there would be a wave which will hit this interface incident, right? And there will be a reflection here. Again, we are discussing the same normal incidence reflection here, and obviously there will be some transmission too in this substrate. We call that bulk medium substrate. So so the our goal is, we looked over the last time, हमें reflection coefficient का पता है. Reflection coefficient अगर एक medium, let's say if this is eta 1 and this is eta 2, we know this is equal to eta 2 minus eta 1 over eta 2 plus eta 1. We know that. We looked over that last time. So this is a basically multi-layer structure right now. You can think like that. So what will be the reflection here? So अगर मैं आपसे पूछूं, this is like a transmission line problem जहां पर you have all two different Z naughts are applied and then load, and what will be the impedance? This is exactly the same thing. So let's very quickly derive this reflection coefficient, जो आपको already आप guess कर चुके होगे ये क्या है, but let's formally put up a very quick math over it. अगर मैं this is the region 2, all right, let's call this is the region 1, this is the region 2, and this is the region 3. What would happen here, that a wave, this is the overall reflection we are talking about. So in between, what's going on, that the wave gets transmitted at this layer, reached here, and then transmitted, and then reflected, reached here, and so on and so forth. And there will be countless reflection transmission. This is the sum of all the reflections in the steady state, and this is the sum of all the reflection in the steady state. So if I call this region 2, इसके अंदर मेरा electric field, again I'm assuming that my wave is propagating in the Z direction, polarized in the X direction. हम उसी terminology के ऊपर चल रहे हैं. So here the electric field would be, let's call this, it's E2M. I'm writing the electric field in the region 2
in the region 2 here. So this would be, you know that it's the sum of the forward wave, beta 2, and again, I'm taking the lossless case. So there is no alpha, beta 2z plus plus this would be let's call at this interface the reflection coefficient gamma 2 3. So gamma 2 3 e j beta 2z, and in the ax direction, right? We can write it here as we know that. And similarly, we can say this magnetic field in this region would be what, E2m over E2 E minus j beta 2z minus gamma 23 ag beta 2z in the ay direction, right? Now what I can do here, I can take the magnitudes, means no direction, and I can write that the wave impedance just in the same way of C is E2 over H2 in the second medium, and this would become what? ये दोनों cancel out हो जाएंगे, and eta 2 and E minus J beta 2Z plus gamma 2 3 EJ beta 2Z over E minus J beta 2Z minus gamma 2 3 EJ beta 2Z. You must be recalling the exact same kind of math we did for the transmission line, and you know what we're going to do here. We will use the Euler's identity, cos beta 2z plus minus j beta 2z for this, and we will put the reflection coefficient in the same way as we did while drawing the transmission line, and we can simplify it and calling that as input impedance. Here input ये हम कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर eta in, because this is kind of, you can think like that from the transmission line perspective. This is the load and this is eta 2 is a transmission line kind of thing, but this is the free space medium जो कि transmission line में नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसको बड़े आराम से introduce कर लेंगे. So eta n, after invoking all these relationships, will be identical to what we know in the transmission line. So cos beta 2l minus j eta 2 sine, beta 2 z minus j sine beta 2 z over eta 2 cos beta 2z minus j eta 3 sine beta 2z. And again, as in the transmission line, when we substitute z is equal to minus L, so this all would go away. This would become L, 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 and this would become plus as in the transmission line. अब आप इस relationship को you can easily compare the top relationship which we wrote for the transmission line. This is exactly identical. Only the difference is that for the load we have eta 3s. You must have on your copies. You can see for the load ZL we have eta 3, and for Z naught we have eta 2. So now you can see my goal was to compute the reflection at this end. Now I can say if this is the n reflection from this guy, overall reflection is eta n minus eta 1 over eta n plus eta 1. And now you can see this thing. तमाम की तमाम चीजें जो हमने डिस्कस ट्रांसमिशन लाइन में की थी, you can see अगर this guy, if this guy, let's call it, if this guy is of length lambda by 4, तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे जल्दी से, eta n किसके बराबर हो जाएगा? If this length is m lambda by 4, this eta n will be equal to what? तो बताएगा जल्दी से मुझे. Yes? eta 3. No. वो तो m lambda by 2 के लिए है, जब हाफ वेव लेंथ, ये क्वार्टर वेव है लेंथ. क्वार्टर वेव के लिए क्या था इम्पेडेंस? आप इसको इन्वोक भी कर सकते हो. यू कैन सी दिस थिंग फॉर क्वार्टर वेव, दिस वुड बी
that 90 degrees, and you know from the transmission line knowledge. So क्या हो जाएगा याद? Do you recall that eta n for quarter wave length would be what? किसको याद है? Yes, anybody recall that? Sir, eta 2 square over eta 3. Yes, absolutely right. Eta 2 square over eta 3. ये बिल्कुल वही ट्रांसमिशन लाइन जहां हम क्वार्टर वेव लेयर लगाते थे. और अगर लेंथ इस लेयर की लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल हो, फिर जो वो स्टार्ट में वो जो बोली थी, आई डोंट रिकॉग्नाइज वो कौन थी. सो इट वुड बी eta 3 एज शी सेड. एब्सेंटी लेयर जैसे आपने पहले आप देख सकते हो, जब कल हाफ वेव लेयर होगी तो 180 पे ये जीरोस हो जाएंगे, एंड ये -1, ये eta 2 कैंसल, और eta 3 आ जाएगा, जस्ट लाइक इन द ट्रांसमिशन लाइन. एंड यू नो, अच्छा अब इसका इसका जो नॉलेज है ना क्वार्टर वेव लेयर का, आपको याद होगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वी यूज दिस नॉलेज ऑफ क्वार्टर वेव लेयर फॉर इम्पीडेंस. लैम्डा बाय 4. जी जी लैम्डा बाय 4. जी लैम्डा बाय 4 या निकालेंगे क्वार्टर वेव. जी जी फिर बिल्कुल. उससे हम निकालेंगे ये क्या कहते हैं ट्रांसमिशन वाला, नहीं वो नाम क्या है इसका, भूल रहा हूँ बाबा नाम. हम उससे ये निकालेंगे कहते हैं आर टाइप. जी जी ये बिल्कुल. एनआई. जी जी, I'm coming to that, just hold down. So so what happened here, just like in the transmission line, you used quarter wave length. Please switch off your mic. Just hold down. Let me finish what I'm saying. Oh, sorry. Hold on. Mike. So what happens here, that in a transmission line, when you use a quarter wave length to impedance match, here too, you know, in many cases, there are many applications where you do not need a reflection from a surface. And what you can do, you can put a quarter wave layer of a coating there to minimize the reflection. कोई इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो ग्लासेस लगाते हैं, लाइक यू नो, आप में से, ओके लेट बी इंटरैक्टिव, हु पुट्स, just hold down, just please switch off your mic, let me call it the shots. Switch off the mic. So I know Zahra puts on the glasses. Zahra, can you be interactive with me? Sir. Okay, so so Zahra, so what happens is that when you go and you know, have you been to the glasses shop and ordered glasses for you, or you ask your father to order it for you? No. कभी नहीं गई? No, I'm saying that I go myself. Okay, great. So when when that optician, the guy, the person, he asks, you know, कि anti reflection coating चाहिए, कभी सुना आपने word anti reflection coating? जी. Okay. So you can see, actually all of you can see, सारों को नजर आ रहा है मेरे maybe glasses के ऊपर एक green shade सा पड़ रहा है. If you can see that, it's anti reflection coating. So basically इस कोटिंग को क्यों करते हैं हम, कि जब कोई लाइट आ रही है मेरी ग्लासेस को हिट करती है, अगर रिफ्लेक्शन होगा, यू कैन सी कि बहुत सारा मेरे आंखों आगे हेवले आ जाएंगे, इन अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. आई वांट टू मिनिमाइज दैट. आई डोंट वांट एनी रिफ्लेक्शंस देयर. सो व्हाट यू कैन डू, you can coat a layer, you know, and as an example for what I said here, as an example, you can coat a quarter wave layer to minimize the reflections. Although practically a quarter wave layer se reflections minimize nahi hote, you need to do multiple coating. So that's a practical example for and if you look maybe, you know, अगर किसी के पास वो जो DSLR कैमरास होते हैं, अगर किसी के पास वो हैं, उसके लेंस के ऊपर भी कलर्स आते हैं, है किसी के पास वो कैमरा? Anybody has that camera? चलो नेवर माइंड. सो यू विल सी उसके लेंस के ऊपर कलर्स होते हैं, उसके ऊपर भी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है टू 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 to minimize all those reflections. So coming back to our story, you know, transmission line में impedance matching होती है. यहाँ पर in real life, for example, in the light, in the optics, in the photonics, you want for many applications कि light reflect back ना हो. So you have these anti-reflection coating, and these lambda by 4 layers help
help there. ठीक हो गया? So same thing here, just like in the transmission line, that this is the amplitude reflection coefficient. So if in order to find the power, what you need to do, you just take the gamma square. That would be the power reflection coefficient. And the transmission jo hogi, wo usi tarah transmission line ki, this would be the transmission coefficient. ठीक हो गया? So that's something. और अगर अब मैं आपसे ये पूछूं, अब मैं आपसे अगर ये जी जी Sir, so yes. so we need to make transmission, we need to make reflection coefficient 0, so that there are no reflections back. Yes. So there are no. Yes. But to it, would we need to make n1 infinity or very large? So you mean eta 1? N1. Nietzsche, you've given the क्या कहते हैं, reflection coefficient is equal to n in minus n1. नहीं, So eta 1 है. This is eta 1. All right. We have to make eta 1. Oh, sorry. This is eta n plus eta 1. Yeah. All right. So Yes. This is the same thing. अच्छा. So जी ठीक है. अच्छा कुछ और बात. one of them. जी जी बोलें. Okay. Okay. So we have to make the denominator in very large or but no, it's a general because we can. It's a general expression जो आपने transmission line में पढ़ा है in terms of reflection coefficient like ZL minus ZL naught, ZL plus Z naught, everything is applicable here. ठीक है? Nothing left behind. But so we need to make in reflection coefficient 0. So wouldn't the denominator need to be infinity or very large, because infinity is not possible with this equation. So in order to make it 0, you need to make eta n is equal to eta 1, and that will make it 0. Okay, just like in the transmission. Okay, just I want to go. I want to go ahead. Maybe we can take these questions offline later on. So let's go ahead. Okay. So the other thing which I would like to tell you, you should recall that that if we have a perfect conductor, अगर हम इसको देखें, इस expression को, if we recall you, the perfect conductor क्या होता है? Eta क्या होता है? Let's me okay, never mind. Eta की expression के denominator में sigma होता है, and there is some terms here. So if you have a perfect conductor, sigma becomes infinite, and for a perfect conductor, eta becomes 0. You can see this thing. Let's say अगर मेरा eta 3 जो है, in the top example, eta 3 is a perfect conductor के ऊपर coating हुई है. So eta 3 becomes 0 because it's a perfect conductor. And you can see when this becomes 0, you can see this thing that I get input impedance of what? The same as the short circuit. Eta J, eta 2, tan beta 2L, just like the short circuit behavior. So all those, the bottom line is this, that all the concepts you learned in transmission line, they all are applicable here. The short circuit here is basically perfect conductor. Or open circuit kind of thing is difficult to achieve in the waves, but so I'm not sure उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन short circuit is your perfect metal or conductor there. ठीक है? And concepts are all there. So remember, when you hear about a perfect conductor or metal, you right away think कि उसकी intrinsic impedance is 0 right away. And that's why once you put it in the relationship, if this is, let's say if this is 0, you can see reflection coefficient would be 1. अच्छा, इसी की extension ये है, let's say अगर मेरी बहुत सारी layers हैं, ये substrate 1, let's say as it is, so this would be eta 1, eta 2, eta 3, and eta 4. Let's say ये bulk में है, and I would like to know what is my reflection here. So what you would do, you will solve it in the same way as you were solving it for the transmission line for the multiple transmission lines. आप क्या करोगे? This is the bulk. What you would do, let's say you will figure out impedance here. उसी तरह relationship वो जो ये आपका जो impedance relationship आपने ऊपर लिखा हुआ है, उसमें eta 4 would be the load and eta 3 would be kind of that intrinsic impedance, जैसे transmission line में है. You figure out this intrinsic impedance, let's say 1.
अब ये eta in 1 would become the load for this kind of impedance, and you write that relationship again, and you figure out intrinsic impedance here. You have done those kind of problems in transmission lines जहां पर you can think कि अगर आपकी दो transmission lines लगी हुई हैं ZO1 ZO2 and load लगा हुआ है, and what would be the input impedance here. So the way you solve that is exactly identical you're solving here. And once you have this intrinsic impedance in, you can figure out the reflection coefficient. So ये जो multi layers हैं, these multi-layer structures, they have enormous practical applications actually. Enormous practical applications. एक वो जैसे मैंने आपको ये बताया है, ये coating जो है ये basically मेरी जो glasses के ऊपर है, you can see the green color which is being reflected. That is a signification. That's signifying the anti-reflection coating. और वो multi, उसमें बहुत सारी layers हैं. उसकी वजह वही है, आपको याद होगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर एक क्वार्टर वेव लेयर लगाएंगे तो पॉसिबली नहीं है कि वो जो उसकी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो निकलेगी उसका हमें एक्चुअली कोई मटेरियल मिल जाए. So what you do, you put multiple layers to control your reflection to have that. ठीक है. So इसकी एक और बड़ी practical example है of this. For example, when you have that lambda by 2 layer, जब lambda by 2 layer होगी तो आपका कोई impedance में change नहीं आएगा. So if I recall you guys, maybe जो लाहौर में रहते हैं, किसने ये देखा हुआ है weather radar जेल रोड के ऊपर? Anybody has seen this weather radar on the jail road? Yes, sir. जबरदस्त. जबरदस्त. ये बेसिकली जो मेरा ख्याल है, आप यू मस्ट बी स्टडिंग इन लाहौर कॉलेज और कनेट बिकॉज इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ दैट, राइट? No, sir. ओके, ओके, कोई बात नहीं. खैर, ये जेल रोड के ऊपर है. दिस इज द वेदर रडार. ये वेदर रडार क्या बता रहा है? ये वो बता रहा है जो मैंने आपको असाइनमेंट 5 में एक प्रॉब्लम दिया था कि वो वेदर मॉनिटरिंग जैसे रेन मॉनिटरिंग कैसे करनी है, एग्जैक्टली वो कर रहा है वेदर रडार. अच्छा, इस वेदर, अब ये है चक्कर, ये कि ये एंटेना नहीं है, इसके इर्द गिर्द इस एंटेना इज इनसाइड, और इसके इर्द गिर्द एक लेयर लगाई हुई है, क्योंकि अगर कोई आंधी तूफान आए, वो जो अंदर एंटेना ना वो गिर ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेयर लगाई हुई है. लेकिन इंश्योर किया हुआ है कि ये लेयर की इंपेडेंस लैम्डा बाय 2 है, कि इट डज नॉट इम्पैक्ट any outside impact on the antenna. Impedance basically lambda by 2 means कि absentee layer है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जो बाहर impedance है वही अंदर है. So that how it helps. So so I thought कि ये एक आपके लिए एक अच्छा practice. So let me actually show you. अगर अंदर से मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, नहीं ये नहीं, ये बाद में दिखाता हूँ. ये so if this is not the jail road radar, you can see इस तरह अंदर घूम रहा है and it's trying to detect. Oh, ये शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? वीडियो नहीं हो रही? Are you seeing this video? Yes, sir. हो रही है, sir. Okay. So you can see this radar is basically revolving around, and it's trying to detect rain all along. और वो जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर है कि इस रेडार को ना कोई बर्बादी हो इसके साथ. और वो लेयर लैम्डा बाय 2 की लगी हुई है. ठीक है. अच्छा, अब मेरा ख्याल है यहाँ पर आप लोगों का शायद कुछ लोगों का क्वेश्चन होगी, रेडार डिटेक्ट कैसे करता है रेन. So maybe as a मैं कुछ आपको क्विक सी दिखाता हूँ एनिमेशंस का वीडियोस हैं YouTube से, I found those. So you can see what happens. आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि ये that this radar okay, so you have seen कि ये circles चल रहे होते हैं and detection. So how that comes actually like this. The radar sends a pulse, उसका ये सारा profiling हुई हुई है. Circles यानी कि distance में वो profiled है सारे. Once it receives, it sends a pulse, and when it hits a target, come back and it detects कि कहाँ पर presence है, and that's how it figures out what's going on. It's a very, मैं आपको simple example दे रहा हूँ आपको. Although इसमें sophistication, ये नहीं basic concept है, लेकिन sophistication है कि वो किस किस्म का target and stuff like that. अच्छा, अब वापस आते हैं उस सवाल के ऊपर, वो जो weather radar है. So if I show you like you can think like this. ये नजर आ रही है ना जिसमें radar और rain बना हुआ है, returning echoes लिखा हुआ है. You can see that, right?
Yes. Yes, sir. Okay, so you can see what happens, that radar sends the plane waves, and when there is a rain, ये plane waves impact होंगी. हाँ, plane waves का magnitude बदलेगा, whatever, उनका magnitude, उनका phase, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं. There can be so many other things which is happening. So once अगर उनको कम रेन मिलेगी, जो रिटर्निंग, क्योंकि रेन है, एक मटेरियल है, उससे रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी चीजें, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होंगे, और ये रेडार उनको रिफ्लेक्टेड वेव्स को डिटेक्ट करके बनाएगा कि रेन कहाँ है. आप इमेजिन कर सकते हो, रेन ज्यादा होगी तो वो ये रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू लेस रेन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसके ऊपर अगर आप ये देखो ना, आप लोगों ने अक्सर ये देखे होंगे, ये फिर ये जो आपका घूम रहा था रेडार, वो पूरा अपना एरिया प्रोफाइल कर रहा है. सो ये फिर कलर कोड करता है कहाँ पर रेन ज्यादा है और कहाँ पर रेन कम है, कहाँ पर बादल है, एंड स्टफ लाइक दैट. You must have seen those kind of pictures lying around on when somebody is reporting the weather or something like that. वो basically इस weather radar, जो कि एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सिंपल इन इक्वेशंस के थ्रू, जो भी आप लोगों ने देखी है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की इक्वेशंस, उसको इसके साथ इस्तेमाल होते हैं. इसी के ऊपर मैं आपको एक और चीज प्रैक्टिकल बताता हूं. आप लोगों ने आजकल ये स्मॉग एंड एयर क्वालिटी के मुतालिक बड़ी बातें सुन रहे होंगे, व्हाट्स हैपनिंग हियर, AQI इंडेक्स. So basically ये PM 2.5 particles, amount of particles measure कर रहा है, temperature, pressure, all those things, ये सारे basically electromagnetically, most electromagnetically या optically, यानी कि with electromagnetically and optics में कोई फर्क नहीं है. वहाँ पे एंटेना की जगह लेजर है, लेकिन प्रिंसिपल्स वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर. So basically ये जो PM 2.5 पार्टिकल या स्मॉग पार्टिकल्स हैं, they are actually being, वो कैसे होते हैं, वो what they do, that they shoot a laser. You can think like a plane wave. You send a plane wave, and that plane wave is passing through, जहाँ से एयर को सैंपल का है, और अगर उसमें पार्टिकल्स होंगे तो it will start scattered. You can see, आप स्कैटरिंग इस तरह समझो, ओके, आई शुड हैव माय लेजर पॉइंटर, बट नेवर माइंड, आपको अगली दफा दिखाऊंगा कि ओके, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको. यहाँ पर देखते हैं अगर यूट्यूब पे ही मिल जाए. लेट्स सी क्विकली, ये बात खत्म हो जाए. सो लेजर स्कैटरिंग, या ये नजर आ रही है वीडियो आपको? ये नजर आ रहा है आपको? ग्लास, पानी और ये सारी चीजें, यू सी दैट? जी सर. Yes, तो sir. ये आपको ये नजर आ रहा है, ये ह्योले, एक तो मेन बीम है और इसके इर्द गिर्द स्कैटर्ड है, स्कैटरिंग है. यू कैन थिंक लाइक दैट, राइट? सो व्हाट हैपेंस कि जो बीम की एक्चुअल पावर होगी ना, वो स्कैटर अराउंड हो जाती है, यानी कि वो पावर नहीं आ रही. तो ये प्रिंसिपल है PM 2.5, यानी कि रफली ये प्रिंसिपल है कि अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे, स्कैटरिंग ज्यादा होगी और पावर कम होगी, एंड दे कैन मेक एक कैलिब्रेशन कर्व कि कितने पार्टिकल्स हैं, एंड देन दैट्स हाउ दे आर मेजरिंग दिस AQI इंडेक्स एंड स्टफ लाइक दैट. So basically, the point of all those, telling you all those practical applications is that these simple relationships which we are looking at right now, they are at the heart of all those relationships. एक और आपको क्विक सी बात बताता हूँ, और एक आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम है, मैं आपको सुसाइड बॉम्बर को डिटेक्ट करने की बताऊंगा, वो भी इसी इन्हीं लाइंस के ऊपर होता है. Dr. Momin and Tahir, what they are doing actually, they are trying to डिटेक्ट द क्वालिटी ऑफ मिल्क, डब्बों के अंदर. वो क्या होते हैं, RFID, शायद आपको पता हो, स्कैन हो जाते हैं कार्ड जैसे आपके, वो जो है ना स्कैन होता है, समथिंग लाइक दैट. दे आर ट्राइंग टू पुट RF टैग हेयर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मिल्क के साथ इन कांटेक्ट होके वापस आ रही है रिफ्लेक्शन. सो दे आर ट्राइंग टू पुट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू लुक ओवर द क्वालिटी ऑफ द मिल्क. बट द पॉइंट इज दिस कि मल्टी लेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम इन कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग है, जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं if you know this electromagnetic theory behind it. I know some of you are working with them, so remember, you can all apply this simple relationships which I'm just teaching you today. ठीक है, अच्छा, अब कुछ जी
सर क्वेश्चन था जी जी पूछें। सर अभी थोड़ी देर पहले when we were talking about eta and the reflection coefficient you mentioned कि the short circuit situation is possible but open circuit isn't, तो उसको प्लीज आप थोड़ा बता देंगे why ओपन is that? सर्किट मुझे नहीं, मैं नहीं कहता मुझे पॉसिबल, लेकिन मुझे नहीं पता कि ओपन सर्किट को मैं कैसे आपको समझाऊं, यानी कि आई एम नॉट श्योर, मे बी उसके लिए कोई एग्जॉटिक मटेरियल्स हो, बट आई विल थिंक अबाउट इट। या मैं अभी बता नहीं Okay, सकता, आई डोंट हैव द आंसर, सॉरी। कौन बोल, किसने पूछा ये? मरियम। मरियम, या आई डोंट नो ओपन सर्किट क्या Okay, होगा। शॉर्ट सर्किट तो कंडक्टर है, ओपन सर्किट करने के लिए इम्पिडेंस को इन्फिनिट करना पड़ेगा। इम्पिडेंस, अच्छा चलो अभी कर लेते हैं, मरियम आपके साथ ही डिस्कशन कर लेते हैं। सो इम्पिडेंस का क्या रिलेशनशिप है? ईटा इज इक्वल टू, कोई बताएगा मुझे जल्दी से, जे क्या है, जे ओमेगा म्यू क्या है? ओके लेट मी लुक, किसी को याद है या मैं देखूं जल्दी से नोट्स, क्या है ईटा का रिलेशनशिप इम्पिडेंस का? so let me look. So what is that? Where is? So j omega mu over sigma plus j omega epsilon. अच्छा, अब इसको इन्फिनाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट करनी पड़ेगी, वो इम्प्रैक्टिकल है। म्यू इन्फिनाइट करना पड़ेगा, वो भी इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, सिग्मा और जे ओमेगा एप्सिलॉन को अगर मैं कर दूं ना, क्या करूं? अगर इनको मैं बराबर कर दूं तो इन्फिनाइट हो जाएगा। सही बात है, राइट? ऐसा ही होगा? नहीं होगा, नहीं। सर इनको जीरो करने से नहीं होगा? हाँ, इस सारी चीज को जीरो करने से होगा। अब वो पता नहीं कैसे होगा जीरो, यानी चलो सिग्मा तो जीरो है, लेकिन ओमेगा एप्सिलॉन तो डीसी के ऊपर जीरो होगा, और डीसी इस, अगर डीसी पे चले गए तो सारे रिलेशन फेल हो जाएंगे। सो मे बी ये शायद प्रैक्टिकल नहीं है, आई एम नॉट श्योर मरियम, आई डोंट हैव द आंसर, बट मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मे बी कुछ रिसर्च फेस में कुछ चीज हो, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव द आंसर मरियम, सॉरी। सर नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, आई वांट टू सॉल्व नाउ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप की थोड़ी सी मजीद मैथ देख लेते हैं। सो लेट्स लुक ओवर वन ऑफ द प्रॉब्लम, let's look over that, let me take that out. So the problem says, okay, that अच्छा, बाय द वे, ये जो मैं मल्टी लेयर्स डिस्कस की हैं, ये आपकी जो हेट बुक है ना, उसका 12.3 सेक्शन है। मैं आपकी वो जो एक्सेल शीट है, जब उसको अपडेट करता हूं तो आई राइट द सेक्शंस देयर, सो मेक श्योर दैट यू लुक ओवर द बुक देयर। So let's look over this problem, a very simple problem. So let's say that I have a glass. ये मैं अपनी glasses, let's say जो मेरी glasses हैं, glass, ये glass substrate है usually, जिसके ऊपर coating होती है ना, उसको substrate कहते हैं। Epsilon R3, let's say call that as a region 3. इसकी epsilon R3 is 5.1 and इसका mu R3 is 1.0, और ये dielectric है, इसका sigma 0 है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक कोटिंग करनी है ऑफ सम एप्सिलॉन एंड इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, मुझे नहीं पता वो क्या है, कोटिंग करनी है। और वो कोटिंग मैंने इस तरह करनी है कि मेरी रिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, यानी आई वांट माय रिफ्लेक्शन टू बी जीरो, और यहां पर मेरा फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट। आप इसको समझ दो, मेरी ग्लासेस हैं, बाहर से एक आएगी वेव फ्री स्पेस से, ग्लास के ऊपर गिरेगी, ग्लास के ऊपर क्या मैं कोटिंग करूं, मेरा रिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक कोटिंग। सो व्हाट आई कैन डू pretty easily is I know this thing that ये जो कोटिंग है, अगर मैंने जीरो करना है, it has to be quarter wave layer, which means that it has to be eta 1 times eta 3। ठीक हो गया? So eta 1 मेरा फ्री स्पेस है, मुझे पता है by definition this is 377। eta 3 मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, रिलेशनशिप हमने देखे थे, जो कि eta 3 फ्री स्पेस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन और 3। ठीक है, तो epsilon r3 is 5.1, so if I do that I can figure out 377 over 5.1 is equal to 167 ohms. So I can now easily plug in these values
here, and I can figure it out that this is 251 ohms. अच्छा, अब चक्कर ये है, एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसकी और अगर ये मेरा इसकी इम्पेडेंस निकली है, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक कोटिंग की बात करते हैं, वी actually want to specify, yeah, impedance is good enough, but we need to specify its refractive index or relative permittivity. So relative permittivity क्या होगी? eta 2 नहीं, so eta 2 किसके इक्वल है? eta 2 इक्वल है 377 over epsilon r2 square root is equal to 251, जो मैंने फिगर आउट किया है, एंड यहां से आई कैन इजीली फिगर आउट that my epsilon r2 is 2.25. अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ये जो क्वार्टर वेव लेयर थिकनेस है, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि ये λ/4 है, λ/4 है, तो मैंने इसकी जब थिकनेस निकालूंगा λ/4, सो आई वुड से कि मैं किस वेवलेंथ पे निकाल रहा हूं, किस वेवलेंथ पे निकाल रहा हूँ, क्या मैं ग्रीन पे निकाल रहा हूँ, हम यूजुअली ग्लासेस जो हैं वो डिजाइन करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के मिडल में, तो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम 400 है और रेड जो है लेट्स से 700 है, तो समवेयर हम 550 ग्रीन के ऊपर डिजाइन करते हैं, सो लेट्स से ग्रीन के लिए डिजाइंड है, तो मेरी ये थिकनेस क्या होगी ऑन द लेयर, इट वुड बी 550 डिवाइडेड बाय 4, 550 10 to minus 9 meters, ये होगी मेरी थिकनेस। ये क्या होगा? 550 for 1s are 4, for 3s are 12, for 7s are 28, something like this, something nanometers, something 137 nanometers होगी। अब ऑब्वियसली नैनोमीटर कोट करना मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीजर मल्टीपल बनाते हैं, किसका? 2m plus 1 का, and m could be 1000, and you have whatever the thickness layer there, and you have the quarter wave layer. अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर द डिजाइन वाज ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, और इसके अंदर भी सिंगल फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, यहाँ पे तो हम चलो लाइट्स के ऊपर हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। अगर इफ यू चेंज द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली दिस डिजाइन विल फेल। इफ वी से कि ये डिजाइन रेड वेवलेंथ के ऊपर भी काम करे, तो दिस इज नॉट गोना वर्क, because we need to change the we need to change the we need to change the thickness। इसी वजह से एक ये भी रीजन है, और वो एडवांस टॉपिक है, लेकिन जस्ट गिव यू सम क्विक फीडबैक कि सिंगल लेयर डिस्करेज्ड होती है, सिंगल लेयर प्रैक्टिकल नहीं होती, यू ऑलवेज हैव ए मल्टी लेयर्स सो दैट यू कैन कवर सम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, ऑन माय ग्लासेस the anti-reflection coating has many layers, so that it has some coverage of the visible spectrum. It's not doesn't work on single wavelength, so more बाकी wavelengths पे भी अच्छा वर्क करता है। लेकिन मैं आपको ये डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, पाकिस्तान के अंदर एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस सही नहीं बनाए जाते, सो दे स्टिल अगर आपको आपको मैं एक टिप देता हूँ, अगर आप जाओगे ना, अगर फॉर एग्जांपल ग्लासेस बनवाने, और वो आपको कहता है कि मैं ज़बरदस्त ग्लासेस आपको बड़े टॉप चला के देता हूँ, बना के देता हूँ, आप ना दिखाओ मुझे ग्लासेस लो, अपने कैमरे से तस्वीर लो, फ्लैश ऑन करना, अगर तस्वीर के अंदर ग्लासेस के ऊपर फ्लैश की रिफ्लेक्शन आ रही है, इसका तो बड़ी घटिया कोटिंग हुई हुई है, जो कि टिपिकली पाकिस्तान में केस है। लेकिन अगर बहुत अच्छी कोटिंग हो, यूजुअली जो या पाकिस्तान में मे बी एक्सपेंसिव जगहों से एक्सपेंसिव कोटिंग्स होती हैं, सो उसका टेस्ट आप देखोगे, जब आप कैमरे से तस्वीर लोगे, फ्लैश जब निकलेगा, फ्लैश रिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा आपको तस्वीर के ऊपर, ठीक है? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड कॉमन टेस्ट टू डू दैट। अच्छा जी, उसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा इजी सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा हल्का सा, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन अ बिट मोर इन्वॉल्व। लेट्स डू the problem at your back of the book 6.7.7, ये बुक प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है? ये है कि एक मीडियम है, राइट, एप्सिलॉन टू म्यू टू, ठीक है, एंड दिस ये अननोन मीडियम है, मुझे इसका मीडियम का पता नहीं है, एंड आई हैव अ कोटिंग ओवर इट जिसका मुझे पता है म्यू वन एप्सिलॉन वन, ये म्यू नॉट है,
और epsilon 1 is 4 epsilon naught, और इसकी थिकनेस भी मुझे पता है, ये है lambda by 4. All right, lambda 1 by 4, lambda 1 by 4, and I want to know, मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि ये अननोन मटेरियल पे एक कोटिंग हुई हुई है, मैंने एक वेव शूट की है, एंड व्हाट आई मेजर्ड द पावर, रिफ्लेक्शन पावर इज, रिफ्लेक्शन स्क्वायर is so it is incident plane wave energy, yeah, so 1% जो है ना मेरा रिफ्लेक्शन हुआ है वापस, ये मुझे गिवन है. What I want to know, what I want to figure out, I want to figure out what would be the relative permittivity of this sky. ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है. ये चीजें नोन है, रिफ्लेक्शन नोन है, और ये फ्री स्पेस है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. सो हाउ वी गोना डू दैट? So it's a very straightforward problem, लेकिन logically इसको करना है. पहली बात, first thing first, हमें ये पता है कि इसकी impedance जो है, I can quickly write that 377 over epsilon R2 है. ठीक है, ये उसकी impedance है. इसकी impedance बड़ी quickly मेरी निकल आएगी. ये क्या है? eta 1 is equal to 377 over 4 का square root, क्योंकि relative permittivity given है, so ये 188.5 आ जाती है ohms. ठीक हो गया, और ये भी ohms. So अब what I can do, what I know this thing, that gamma square is 0.01, 1% है जो मेरा रिफ्लेक्शन है. अच्छा, अब ये भी नोन है, ये भी नोन है. यस, एक चीज और उन्होंने मुझे बताई है, दैट दैट मैक्सिमम जो z मैक्स है ना, z मैक्स, वो इस सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है. मींस अगर मैं कहूं ये z इज इक्वल टू व्हाटएवर, राइट एट द सरफेस z मैक्स मेरा एग्जिस्ट करता है, राइट एट द सरफेस. So z max मेरा एग्जिस्ट करता है right at the surface. So which means what I can do, I can write what I can do is that I will because मुझे ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पता है, इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए मैं रिलेशनशिप निकालता हूँ. सो इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट पे इंपेडेंस चाहिए. लेट्स कॉल दैट एज ईटा इन. ठीक है, ईटा इन किसके इक्वल है? ईटा इन, क्योंकि ये क्वार्टर वेव है, सो इट इज इक्वल टू ईटा 1 स्क्वायर ओवर ईटा 2. ठीक है, बिकॉज क्वार्टर वेव है. सो ईटा 1 स्क्वायर क्या है? 188.5 स्क्वायर, और ईटा 2 377 over epsilon R2. So I can figure out this eta n in terms of epsilon R2, जो कि आता है 94.25 epsilon R2 square root. Now I can write the reflection coefficient. Gamma square मेरा जो है, जो कि 0.01 है, it would be equal to what? Eta n minus eta naught over eta n plus eta naught स्क्वायर. अच्छा, एक बात आप यहां पर बड़े गौर से समझने वाली है, वो ये कि अगर मैक्सिमम राइट एट द सरफेस आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ना, वो प्योरली रियल है. इफ यू रिकॉल दैट, जी मैक्स की क्या थी कंडीशन? -1/2 बीटा 5 + 2m पाई. अगर जी मैक्स 0 है तो इसका मतलब है फर्स्ट जी मैक्स, तो ये 5 0 है, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एंगल कोई नहीं है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर बड़े आराम से अपना सारा काम कर सकते हैं, which is what we precisely did. Now what we can do, eta in, I can do 94.25 epsilon R2 minus eta naught is free space, and same as this, square is equal to 0.01, and I will solve for epsilon R2, which is 23.90. That's how you solve this kind of problem. So iski badi practical, oops, what happened? So there are so many practical examples of this. This is something, for example, electromagnetically आपका एक material पड़ा हुआ है, and you don't know what this material is. So what you can do this kind of a quick experiment जहां पर आप उसके ऊपर beam shoot करो and figure out
measure the parameters and then from there you can figure out. बल्कि आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो, just came to my mind, ये आपकी स्किन है एज एन एग्जांपल, ये आपकी स्किन है, ये आपका ब्लड है, right? And you shoot, obviously skin lambda by 4 layer नहीं, जो भी layer होगी, you shoot an electromagnetic wave and you get the reflection back and you figure out the relative permittivity of your blood, and from there you can make all those corona tests and so many good things. So many good things. So this is very practical and very handy relationships used in many disciplines. ठीक हो गया? कोई सवाल और आप लोगों का इस सारे के ऊपर? सो बेसिकली यहाँ पर हमने टोटली नॉर्मल इंसिडेंस डिस्कस किया है, व्हिच मींस दैट द बीम इज hitting the medium normally. Normally means कि it is hitting the medium along the normal. Normal क्या होता है? Perpendicular to the surface. ठीक हो गया? Any questions so far before I move on and change the topic a little bit, and in the last 10-15 minutes I will talk something different than what we have been covering in the last 45 minutes. किसी का सवाल इस सारे के ऊपर? So this is a very cool, there are many cool applications of this very fun stuff and very easy to understand stuff, जिसको अब I'm sure आप लोग appreciate कर रहे होगे. ट्रांसमिशन लाइन नॉलेज जो आप लोगों ने बहुत अच्छा गेन कर लिया, इंट्यूशन आपके दिमाग में बड़ी जबरदस्त है, फिजिक्स आपके दिमाग में बड़ी जबरदस्त है कि हाउ दिस इज interacting and you can do so many practical engineering or scientific stuff with these kind of relationships. ठीक है? कोई सवाल किसी का बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ये सो गए हैं सारे? सो गए हैं सारे? सो गए हैं कि जागे हुए हैं? आर यू अवेक गाइस? यस? सो गए? Yes, sir. बस ये अकेली जागी हुई है. कौन बोला था ये? Sir, मैं सुबह टूबा. बाकी सो गए हैं सारे? बोर हो गए हो? सर उठे हुए हैं. उठे हुए हो? सोना नहीं है? ऑलराइट. पहली मैंने क्लास 1 घंटे की हुई है, सो बट आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू विद ऑल दीज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई एम सक्सेसफुल. बट नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन. लेट्स डिस्कस नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट. आपको ऑलरेडी कुछ चीजों का पता है, उसको जरा एक थोड़ी सी नई डायमेंशन से देखते हैं. ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने अब हम गोना नॉर्मल इंसिडेंस को खत्म कर दिए और मैं बस ओब्लिक इंसिडेंस का कुछ बड़ा बेसिक स्टफ आज डिस्कस करूंगा और इसको फॉर्मली मैं अगली क्लास के अंदर पूरा इसको लेके जाऊंगा आगे. सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेरा लेट्स से मीडियम है, सो आई एम गोना टेक 10-12 मिनट्स ऑन दिस. पहले तो हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. हमारी अभी तक जो भी हम ये नॉर्मल इंसिडेंस को देख रहे हैं. क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस कि अगर वेव एक एंगल ऑफ नॉर्मल आ रही हो. ठीक है? तो हाउ वी गोना डील दीज प्रॉब्लम्स, हाउ वी गोना कंप्यूट द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स, और क्या वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स के रिलेशनशिप्स होंगे, उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम उनको लिख सकें. सो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरियल हैं, जब तक हम ऐसे थे, अगर वेव ऐसे जा रही है, यू रिमेंबर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ई एक्स और ये एच वाई, अब अगर वेव ऐसे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और पॉसिबली समथिंग लाइक दैट. अब इट्स नो लॉन्गर एन ई एक्स डायरेक्शन, इट इज अ 2-dimensional इलेक्ट्रिक फील्ड. सो what happens to that? So इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेशन को देखते हैं, बिकॉज आपकी जो प्रोपेगेशन है ये भी विक्टोरियल है. ये जो प्रोपेगेशन है जो कि आपका which is actually represented by this k vector, और वो जो आपका यहाँ प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ये भी वेक्टर है, क्योंकि this could be like this could be like this could be in any direction. So this is also a vector quantity. So let's look over it. So आपको मैं ये रिमाइंड करवाऊं, ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसको अब मैंने k का नाम कहना शुरू कर दिया है, सेम थिंग आपकी बुक स्टिल दे रही है, दिस इज इक्वल टू j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन. जब हम किसी भी वेव के लिए, प्लेन वेव के लिए, वी राइट e माइनस के z. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है that we are doing e minus alpha z and e minus j beta z. इसका exact precise मतलब ये है कि ये मेरा z axis है
और मेरा जो k है, जो मेरा k है, जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है, वो टोटली अलोंग z है, तभी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा को z के साथ, कि जितना भी z मैंने कवर किया तो मेरी टेन्यूशन कितनी है, और बीटा को z के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल फिगर आउट द फेज। करेक्ट? ये बात समझ आती है? अगर मैं यही काम ऐसे करूं, किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। बेसिकली इन रियलिटी व्हाट वी आर डूइंग k डॉट z, that we are looking over the projection of this propagation constant over the over the axis z, ठीक है? और ये k जो है, ये वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वही है जो पॉइंटिंग वेक्टर है, e क्रॉस h, बिकॉज k जो है, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है, इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव इज प्रोपेगेटिंग, राइट? तो हम इसको अक्सर k इज इक्वल टू e क्रॉस h भी कर देते हैं। इट्स इट नेवर माइंड, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है वो पॉइंटिंग वेक्टर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, that is basically not magnitude, actually that's, yeah, so it's magnitude is given by the relationship we are seeing that। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको याद होगा ये प्लेन वेव हमने डिस्कस की थी लाइक दिस, इसके ऐसे वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है? और ये इसकी वेवलेंथ है, राइट? ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, बिल्कुल सीधी जा रही है। लेकिन अब व्हाट हैपेंस अगर वेव जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऑब्लिकली जा रही है, जनरल, इन ए जनरल डायरेक्शन। सो इसको थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है, क्योंकि मैंने नोट्स में ऐसे किया हुआ, लेकिन डजेंट मैटर, मैंने अब खैर इसको, मैंने इसको z कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं, और मैंने इसको x कह दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वेव जो है, जो k है, जो k वेक्टर है, वो xz प्लेन में मेरी वेव प्रोपेगेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये इसके प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं, राइट? जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं। दिस इज माय वेवलेंथ। ठीक हो गया? इतनी किसी को ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना बात। ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सवाल, अब बड़ा, लेट्स, ओके, आई वांट बी एन इंटरैक्टिव एंड लेट मी सी। टुडे आई विल टेक रोशन। रोशन, यू आर देयर? सो तो नहीं गई? रोशन सो गई हैं। ऑलराइट, सो रोशन स्लेप्ट। No, sir, वो distortion थी बहुत ज़्यादा, I couldn't hear you पहले। अच्छा चलो, फिर मैं किसी और को लेता हूँ। लेट्स से मैं अब लेता हूँ, लेट मी टेक जैनब। जैनब, यू देयर? जी सर। Okay, Zainab, be interactive with me. So keep your mic on. So if I ask you that कि, अच्छा, और थोड़ा सा आसान करने के लिए एक और, थोड़ा सा मैं बल्कि चीजों को आसान करता हूं आपके लिए। ये के एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, इसका एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। हमें लॉसलेस के अंदर है, हम लेट्स से सिर्फ बीटा है हमारे पास, हम लॉसलेस केस में हम सिर्फ फेस को देख रहे हैं। ठीक है ज़ैनब, राइट? ठीक है। सो दिस के इज सिंपली अ बीटा lossless case. There is no attenuation. If I ask you, what is the phase a wave accumulate here, अगर ये मेरा origin है, ठीक है, अगर मेरा ये origin है, और मैं इसको let's say थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए, मैं इसको, मतलब मैं उसके ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स से ये मेरा पोजीशन वेक्टर r है, x और z की फॉर्म में। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर फेस कितना है, तो अब कैसे, अगर वेव यहां से प्रोपेगेट शुरू हुई है और यहां पर पहुंची है, तो उसका फेस कैसे आप कैलकुलेट करोगे? The distance traveled into beta. और नहीं, क्योंकि बीटा इज अ वेक्टर, मे बी यू विल से फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बीटा ऑन दिस आर, Yes. राइट? जी यही सर। करोगे ना, बिकॉज बीटा आप देख सकते हो क्लियरली। अगर मैं यहां पे लिखूं के इज बेसिकली व्हाट, के एक्स ए एक्स है और प्लस के जी ए जी है। It's a clear vector, and similarly r is also a clear vector, x ax Yes. plus z az। so आप इसका क्या करोगे? You will do the dot product of these two, Dot product. जी which सर। would be what? So this would be x kx KX. plus
Z, plus Z KZ. ये होगा इसका फेस। और अब kx किसके इक्वल होगा? KX will be Let's say beta cos theta. yes, अगर ये थीटा है, so this would be beta cos theta, Cos theta. and this would be beta sin theta. So with the k is being resolved, it's a vector, right? सही बात हो गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, नाउ अब थोड़ी सी मैं चीज को बदलता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहूं और ये है, रिमेंबर ये प्लेन वेव है, इसके वेव फ्रंट्स, ऑल्दो वेव इज प्रोपिगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, लेकिन इसके वेव फ्रंट्स तो हर तरफ जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर फेस कैसे निकलेगा? व्हाट यू वुड डू? अब सर, अब हमारा के जो है वो डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग टू द सेकंड आर वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन. Yes, absolutely right. So basically you will do the same thing. यहां पर तो आप राइट वे मल्टीप्लाई राइट वे कर दोगे ना, x जितना जो भी है x k x, लेकिन यहां पर you will actually take the projection that how much Yes. this k is being projected over r to figure out the things, right? So in reality, अब जो important बात है, yes Zainab, you can switch off your mic. इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम ये जो फेस लिखते हैं फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव में, इन रियलिटी वो ये है k डॉट r। अब r, अगर r ये हम इसको फ्लिप करके इधर ले आए, r could be simple x, so it will be kx, लेकिन in reality this is a two dimensional thing which is this। और प्लेन वेव्स के लिए, क्योंकि ये प्लेन वेव्स हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो यहां पर मैंने आपको टेक, और लेट्स से अगर ये वो सिंपल लॉसलेस केस है, दिस वुड बिकम बीटा जी जी, ठीक है। सो दिस डिफाइंस द के। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए टेक होम मैसेज आज में नया है, वो ये है कि के इज अ वेक्टर विच कुड बी रिजॉल्व्ड into two components, k और propagation constant। remember this is a propagation constant could be resolved। तो यहां पर एक और फन फैक्ट ये है, अगर आप क्लोजली, यानी कि यहां पर तो शायद नजर इतना ना आए, लेकिन अगर घर में आप रूलर और पेंसिल लेके ये ड्रॉ करोगे वेव फ्रंट्स, यू विल फाइंड कि इसको अगर मैं कहूं ना, ये वाली दिस वन, लेट्स कॉल दैट दिस इज लैम्डा z एंड दिस इज लैम्डा x। ये लैम्डा x, लैम्डा z और लैम्डा, ये तीनों डिफरेंट हैं, यानी लॉन्ग x इज अ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, नहीं, sorry, so this would be something like this, यहाँ पर it would be something like this, or this would be something, ये जो wavelength है, this all three would be different। इनको हम basically वही since ये frequency के साथ भी connected हैं, c दो f lambda करके, so these are all spatial frequencies भी हम इनको कहते हैं, because these are all spatial frequencies, these are not temporal frequencies। so you can see these things very clearly that बीटा जो है वो 2 पाई बाय लैम्डा के भी इक्वल है, राइट? एंड दिस इज सेम एज टू, अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे, दिस विल से लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा। और अगर आपको मैं ये समझूं, अगर आपको ये नजर बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ये बीटा है, so it can be resolved into the two components beta z and beta x। so this is same as 2 pi over beta x square plus beta z square square root, and similarly lambda x is 2 pi over beta x and lambda z is 2 pi by beta z। the only thing हमने जो बदली है ना, सिर्फ विक्टोरियल चीजें बीच में ले आए, और कुछ भी नहीं हमने बदला, that's the only thing। और यहाँ पर important बात ये है कि ये जो in the k vector or in the propagation constant vector, when the wave is propagating, you have a two-dimensional problem। three-dimensional problem है, लेकिन हम इसको two-dimensional के अंदर देखेंगे, in both axes के अंदर हम देखेंगे how the things would change। and similarly अगर lossless ना हो, so you will see कि आपका जो attenuation है वो भी ऐसे ही, this is the same way it would change, that there would be x alpha x plus alpha z z, something on those lines। so I think I'm going to stop
here, and that's what I want to discuss today. And yeah, we'll meet again on Monday. अपना ख्याल रखें. I'm still with you. अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, I'm here with you after this. So let me stop the recording. Okay, जो लोग देख रहे हैं, inshallah, we'll see you on Monday.